Hi dear students. So this question came in JEE Advanced Paper 1 2020 Physics. This was a fairly simple question. Absolutely no criticality was present in this question. किसी भी सीरियस कैंडिडेट ने जिसने जेई एडवांस की प्रिपरेशन करी है उसने डेफिनेटली इस क्वेश्चन को किया ही होगा. इन फैक्ट आई विल टेल यू कि इस ये क्वेश्चन इंस्पायर्ड कहाँ से था. This question exists almost in all the standard institutes material. I'm sure you will recall this question. इसमें अपन इंक्लिनेशन को स्लोली इंक्रीज करते हैं एंड द क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट कि ये क्यूब कब टॉपल कर जाएगा. Of course, we are assuming कि friction is enough so that this is not going to slide. So the concept involved here is that कि when this mg will pass through this point. इस point से जब mg pass करना शुरू कर जाएगा तो उस instance पे ये क्यूब टॉपल कर जाती है. आई एम श्योर यू वुड हैव डन दिस क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम आइडिया पे था. लेट्स सी हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो दिस वॉज एन इंक्लाइन प्लेन और यहाँ पे एक बॉल ऐसे स्टक थी. नाउ द आइडिया इज दैट if you keep on increasing the inclination, so there will be a moment when this ball is just going to topple. Just it is about to topple. मतलब अगर हम थीटा को थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे, so this ball is going to topple. So we can say that कि एंड बी पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जीरो हो चुकी है. विजुअली इट इज स्टिल इन कॉन्टैक्ट बट एक्चुअली एंड बी से कोई फोर्स आ नहीं रहा है बिकॉज इफ वी इंक्रीज द इंक्लेशन जरा सा भी, so the ball is going to topple. Net torque is still zero, mind you, because this is the last stage of rotational equilibrium. At the end A, the torque of force from the end A is anyway zero about the point A. Hence, since the total torque is zero, so the idea is that mg would be passing through this point. Then only we can say that net torque will be zero. Now, as you can see, the question becomes fairly simple. This is given R and this is capital R. This angle will be theta, because if this angle is theta, then normal reaction is also going to, normal direction also makes an angle of theta with the vertical. So in this triangle, if you see, it's very simple to write sine theta equals to small r by capital R. And this indeed was the first option. So I'm sure you would have understood this question and the idea from where this question was inspired. Stay tuned for the next question. Thank you.